अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे बर्नौली इक्वेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। इट इज़ बेसिकली सम ऑफ द प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द आइडियल फ्लूइड passing from any pipe at any point must be equal to constant. So this is the statement of the Bernoulli equation. So according to this statement, we can say that we can write the pressure P, the sum of the pressure like P, and the potential kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume is equal to constant. This is a fundamental equation for the flowing fluid. वो इक्वेशन है जो कि फ्लूइड के सारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ये बड़ी बेसिक इक्वेशन थी फ्लूइड की जो बर्नौली ने प्रोवाइड की थी। ये रिलेशन देती है फ्लूइड के प्रेशर, वेलोसिटी और फोर्सेस के दरमियान। इसलिए बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है ये इस इक्वेशन से जो फ्लूइड डायनामिक्स थी उसकी बेस रखी गई थी। जब भी हमने किसी भी फिजिकल फिनोमेना जो कि जिसमें फ्लूइड इन्वॉल्व हो उसको डिस्कस करना हो तो हमें हमेशा बर्नौली जो इक्वेशन है उसका सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमने प्रेशर और वॉल्यूम के प्रेशर और स्पीड ऑफ द फ्लूइड के दरमियान रिलेशन फाइंड करना हो, हमें बर्नौली इक्वेशन वो देती है। इस तरीके से हमने कार्बोरेटर की जो वर्किंग है उसको डिस्कस करना हो, हमने चिमनी से निकलने वाला धुएं को डिस्कस करना हो, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी हमें स्पिनिंग ऑफ द मोशन को डिस्कस करना हो, स्पिनिंग ऑफ द बॉल लाइक इसको डिस्क्राइब करना हो, दो बोट्स जा रही हैं, बहुत करीब हो जाए आपस में स्ट्राइक कर जाती हैं, हमें फास्ट मूविंग ट्रेन के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं उनकी फ्लाइंग जो है बेसिकली वो डिस्कस की जाती है बर्नौली से। तो हमारे यहाँ डेली लाइफ में सो मैनी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। जब जहाँ जहाँ फ्लूइड फ्लोइंग फ्लूइड डिस्कस किया जाता है वहाँ हम उसको उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, which is basically follow the law of conservation of energy. So according to the Bernoulli equation, all these the three types of the pressure whose sum must be equal to constant, but the flowing fluid must have some properties like the flowing fluid must be incompressible, the fluid must be non-viscous, the fluid must have some steady velocity. It means all these are the properties of the, and the fluid must be non-rotational. All these are properties belongs to the ideal fluid. So if we have the ideal fluid and we have the fluid which is nearly equal to the ideal, then all these sum of the pressure would be equal to constant according to the Bernoulli. So we can derive the another relation of the Bernoulli by using this relation by putting the value of the kinetic energy and potential energy. So let's derive the another form of this equation. So P, this is a pressure, which is also known as a static pressure, plus kinetic energy can be written as half mv square over volume, plus potential energy can be written as the mgh over capital V. We are discussing basically the interpretation, a physical interpretation of this Bernoulli equation. So we will not move towards the derivation of this equation. We are only discussing the physical meaning of this equation. So in this equation, to simplify the equation, let's divide the 2 in the second term in the volume. So P plus, we can say that this can be written as mv square over 2 capital V volume plus mgh over capital V, that is volume, that is equal to constant. So here is a volume and we can delete, we can replace, we can remove this volume from the mass, because as we know that this mass is basically the mass of the flowing fluid, which is equal to the product of the density and volume. So from the density, we know that, as we know that mass per unit volume of the object is called, of any object can be called the density of the object. So from that equation, we can find the value of mass, which is equal to the product of density and volume. So we can replace this term, this is mass, from the product of the volume and density of the fluid, which is basically the constant. The density of the fluid is constant, and volume can be taken from the
volume of the pipe, volume of the cross section of the pipe. So in the next, we can say that, right, P, the static pressure, plus for the M, we can write density into volume, and that was the mv square. So small v square divided by 2, and capital V is a volume, plus here we have also a mass, so we can say that, see that the density into volume into G and into H, and divided by capital V is the volume, so which is equal to constant. So we can cancel out the terms volume in the second and third terms. Volume can be cancelled with the volume. Here also we can cancel the volume. So the result would be pressure plus half, or we can say that rho v square divided by 2, which is also known as half rho v square. So plus rho gh. All are three are basically also called the pressure, because we cannot add the different terms in the arithmetics. So in the arithmetic, we can also add only the terms which have the same nature. So all these are three types of the pressure. One is a static pressure, and all these two are the dynamic pressure. And basically the dynamic pressure, the middle term is basically represent the dynamic pressure, and this represent the static pressure, and this will present the elevation pressure, or the potential energy, the pressure in terms of potential energy. This is the pressure in terms of the kinetic energy, and this is the pressure in terms of the static pressure can be also called. So all these three types of the sum of the pressure must be equal to constant. So let's discuss or write this equation in terms of the heads. The heads mean the in terms of the Bernoulli equation in terms of the elevation is known as basically heads. So let's drive the Bernoulli equation in terms of the heads. To find the Bernoulli equation in terms of head, let's divide the whole equation with the rho g. So rho g is basically also called the product of rho and g, which are also called the specific rate. So let's divide with the whole equation, this whole equation with the rho g. So on the both sides. So next answer will be, we can see that P is a pressure divided by rho g plus rho into v square divided by 2 rho g plus rho g h divided by rho g. And also divide the right side. On the right side here we have a constant value. So by dividing the constant value with the rho g, rho is also the density of the fluid, which is constant, g is which is also constant term. So dividing the constant term with the constant term, we will get the new constant. So we can say that here the constant will be remain conserved or remain same. So here we can take the equation where the terms in the second and third value can be cancelled out. So in the second rho with the cancel with the rho, and in the third term rho g will be cancelled with the rho g. So we can say that now we can write the term, the final result, P over rho g. Rho g can also be called gamma. So plus, here we can say that v square over 2 g plus only h, so that is equal to constant. Let's clear it, but we have only v square over 2g, so it's right. So we can say that this is the type of the Bernoulli equation in terms of the head. So here the first value is, this first value is known as pressure head. This is called pressure head.
This is called dynamic head or velocity head. We can say that this is velocity head. And the third term is known as elevation head, which is written in terms of Z in the book. In the textbook, it is also written in terms of the Z. So we can also replace with the H, it's not matter. This is called elevation head. Elevation head. And this elevation head and the velocity head can also be called a dynamic head. And the first head, that is basically pressure head, which is also called the static head. And all these are the three types of the pressure heads whose sum must be equal to constant according to the Bernoulli. So let's move toward the book, and we can read this topic also from the book. And the another types of the pressure like static and stagnation pressure and stagnation point. What are the concept of the stagnation points and the pressure? So let's move toward the book. So here we can explain the pressure head. So our next topic is basically static, stagnation, dynamic, and total pressure. What is basically total pressure? Total pressure is the sum of all the types of the pressure whose sum must be equal to zero, must be equal to constant according to Bernoulli. So when we discuss about the static pressure, the first term in the left side of the Bernoulli equation can be called the static pressure, that is represented by P, or in terms of head that is represented by P by gamma, or can be called P by rho g. So this type of the static pressure is measured, can be measured with the help of the long tube, or we can measure this type of the static pressure by uh, moving the object whose speed must be equal to the speed of the flowing fluid, and by comparing the with the this speed we can find the pressure of the flowing fluid, which is initially at the static position. So it means whenever the flowing fluid is moving with the constant velocity, and we are also moving some object which is also have the constant velocity with respect to the fluid, it means the velocity, the relative velocity of the both fluid and our object would be zero. So it means, so we can say that the fluid is basically static with respect to us. So in this way we can find the static pressure of the flame fluid. But another method is to find the static pressure is can be written as the by using the piezometer tube. Piezometer is also the instrument which is used to measure the pressure of the fluid, static or flame fluid. So here in the figure we can see that this is the piezometer tube, which is the long tube which is inserted in the flowing fluid. हमने इसको इंसर्ट किया हुआ है, और इसको इंसर्ट करके जैसे हम इंसर्ट करेंगे हम देखेंगे इसमें जो लिक्विड है वो जो फ्लूइड है वो अपवर्ड फ्लो करना शुरू कर देगा, लेकिन एक लेवल पे जाकर रुक जाएगा। जैसे हमने फोर्सेस नोट किया हुआ, इसकी हाइट जो है इस पाइप की सरफेस से हमारे पास एच है, तो यहाँ जाके रुक जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल हो गया है इंटरनल प्रेशर के। इस तरह हम जैसे ही इसकी हाइट किसी पॉइंट पर रुक जाएगा तो हम इस हाइट की वैल्यू से इस एलिवेशन हेड की मदद से और प्लस इसकी स्पीड की मदद से इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है इसको फाइंड करके हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके हम प्रेशर जो है अप्लाई फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमने अगर फ्लोइंग फ्लूइड जो है अगर वो आगे पार्टिकल मूव कर रहे हैं किसी दो पॉइंट पे हमने प्रेशर को कंपैरिजन करना है और हमने ये देखना है किस पॉइंट प्रेशर ज़्यादा है किस पॉइंट पे कम है। हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट 2 है। 1 पॉइंट पे हम फर्ज करते हैं हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी फ्लूइड की वो v1 है। इसके रास्ते में इसकी हाइट जो पाइप की है फर्ज करें वो हमारे पास h31 है। 3 माइनस 1 मीटू से ही हमारे पास एक कॉन्स्टेंट हाइट है। देखिए 1 पॉइंट की 2 पॉइंट की हाइट सेम है। और जैसे हम लोग यहाँ एक ट्यूब लेते हैं जो हमारे पास इन्वर्टेड वन साइडेड इन्वर्टेड ट्यूब है और इसे एल शेप ट्यूब भी कहते हैं, जिसको हम पी टॉट बेसिकली ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब पे जैसे हमने इंसर्ट किया यहाँ इस सेकंड पॉइंट जिसको हमने नाम दिया हुआ है, यहाँ हम प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हैं इस ट्यूब के इस एंड पे, इनिशियल एंड पे। तो हम देखते हैं कि जैसे हम इंसर्ट करते हैं ट्यूब की एल शेप ट्यूब तो लिक्विड जो है इसमें अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन लेवल पर जाके फिर रुक जाएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसके लिक्विड का जो इंटरनल प्रेशर है उससे इक्वल हो गया। इसकी वजह से यहाँ से मजीद ये मूव नहीं करेगा। जब ये मूव नहीं करेगा हम देखेंगे कि वी टू पॉइंट के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स पहले मूव कर रहे थे ऊपर की तरफ जा रहे थे उनकी स्पीड अब जीरो हो गई है।
इस पॉइंट पे जो जीरो स्पीड हुई है, कि हम जानते हैं देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। जब स्पीड जीरो हो तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर आइडियल केस के अंदर इनफाइनाइट प्रेशर होगा, और रियल केस के अंदर इसमें मैक्सिमम प्रेशर होगा, हाईएस्ट प्रेशर होगा। दैट टाइप ऑफ पॉइंट इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट, इसको हम स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। तो इसकी इसी स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो प्रेशर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर एट पॉइंट वन। तो हम इन दोनों को हम इनमें से प्रेशर टू पे कितना होगा वन के रिस्पेक्ट, उसके लिए फिर हम बर्नौली इक्वेशन यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि देखिए दोनों की जो हमने मिड में ये ट्यूब को लिया हुआ है, वन पॉइंट भी देखिए मिड से लिया हुआ हमने, तो दोनों की हाइट जो है, एलिवेशन हाइट जो है वो सेम है। एलिवेशन हाइट जो है वो इस इक्वेशन में कैंसिल हो सकते हैं, बाकी हम इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो लेट्स ड्राइव द इक्वेशन। हम लोग अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, P1 pressure, static pressure at point 1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to the pressure at point P2 at point 2, like near to the P2 tube, plus half rho V2 square plus rho GH2. This is rho density GH2. H2. So as we know that H1 is equal to H2. हाइट सेम है हमारे पास, हाइट सेम है, तो जो हमारे पास टर्म्स हैं जो दोनों तरफ रो जी एच वन है तो कैंसिल हो सकती है रो जी एच टू के साथ। सो वी कैन कैंसिल दिस टर्म्स, दोनों टर्म कैंसिल होगी। इसी के साथ हम जानते हैं कि हमारे पास जो V2 है एट पॉइंट टू, वो वेलोसिटी भी जीरो है हमारे पास। तो वेलोसिटी जीरो है तो वी कैन से दैट दिस टर्म कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू जीरो। ये पूरी टर्म जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म we can be written as equal to 0. So the final term is basically P2 in the right side. So we can write the P2 is equal to the P1, sum of the P1 plus half rho V1 square. This is the term on the left side, V1 square. So we can say that the pressure at 2 is equal to the pressure, sum of the pressure P1, that is the pressure at point 1, and half V1 square, that was the product of the density and velocity of at the point 1. So it means the pressure at 2 is larger than the pressure at point 1. So it means that the pressure at the stagnation point can be called larger than the pressure at the point 1. तो इसलिए हम कह सकते हैं जो स्टेग्नेशन पॉइंट है वहाँ वेलोसिटी जीरो होने की वजह से हाईएस्ट हमें प्रेशर मिला, और जो आइडियल केस के अंदर इनफाइनाइट हो जाता है, जैसे हम जानते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो हमारे पास ये V जीरो हो जाए, हम इसको मैसे भी लिख सकते हैं, वी कैन से दैट प्रेशर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। We can say that here we can, if we take the value of this V is equal to 0, if we take this equal to 0, then the pressure would be something over 0, that is equal to infinite. It means that for ideal case the pressure would be infinite, and in the real case it will have the maximum value, highest value at that point. So इसको मजीद इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, इसको कीबोर्ड ट्यूब से हम बुक से एक्सप्लेन करते हैं इसको। इसमें देखिए हमारे पास हमारे यहाँ डेली लाइफ के एग्जांपल ही जैसे होती है, इसमें हमारे पास स्टेगनेंट पॉइंट बनता है। जैसे हमारे पास देखिए बॉल है, ये बॉल जब स्पिन करती है तो इसके जो सेंटर में प्रेशर होगा वो हाईएस्ट प्रेशर होगा, क्योंकि इस सेंटर पे जब मॉलिक्यूल टकराएंगे और उसकी इसके सरफेस टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उनकी। आगे उनके रास्ते में कोई चीज़ नहीं, उनके रास्ते में सारी ब्लॉकेज होगी ना, क्योंकि स्पीड जीरो हो गई। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स यहाँ इसकी इस अपर सरफेस से टकरा रही हैं, लोअर सरफेस से टकरा रही हैं, वो टकराने के बाद मूव कर रहे हैं आगे, मतलब आगे स्पेस है उनको मूव करने की। यहाँ उनके पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ कुछ देर के लिए उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उसके लिए जो प्रेशर होगा उनका इस वॉल के ऊपर, इस पॉइंट पे, जिसे हम स्टेग्नेशन पॉइंट कहते हैं, वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसी वजह से जो इसका अबव एंड बिलो प्रेशर है वो डिफरेंस क्रिएट होता है। इसकी वजह से हमारी जो बॉल है स्पिन कर जाती है, फास्ट मूविंग बॉल जो है वो स्पिन कर जाती है, या स्पिनिंग जो बॉल है, जो स्लो बॉल है वो भी स्पिन कर जाती है, इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इसी तरीके से अगर हम वाटर गन देखें, जैसे हमारे पास ये वॉशिंग जो हाउसेस होते हैं जहाँ गाड़ियाँ वगैरह धोई जाती हैं, तो वहाँ
इसी जो हमारे पास वाटर गन होती है इसमें से बड़ी हाई प्रेशर से पानी बाहर निकलता है। तो जिस पॉइंट से पानी बाहर निकल रहा होता है उस पॉइंट पे उसका हाईएस्ट प्रेशर होता है फॉरवर्ड। तो टकराएगा किसी भी बॉडी के साथ, लाइक कार के सफर के साथ, तो वो हाईएस्ट प्रेशर अप्लाई करता है, क्योंकि उस वक्त जब वो टकराता है उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। जब पार्टिकल जाके उस वक्त टकराते हैं उसको रास्ते में सारी सरफेस आ जाती है, तो उस वक्त टकराने के बाद उनकी टोटल वेलोसिटी हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, टोटल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो वो टोटल प्रेशर बेसिकली फिर एग्जर्ट कर रहा होता है सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट। इसी से हम सिरिंज की बात करें तो सिरिंज में हमारे पास नीडल से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है, बाहर निकल रहा होता है, वो बड़ा फास्ट जो प्रेशर एग्जर्ट करता है बाहर तरफ आते हुए। तो उस पॉइंट पे भी जो जब वो बाहर निकल रहा है तो फ्लूइड सिरिंज में से, उस पॉइंट को हम कहेंगे स्टेग्नेशन पॉइंट, और वहाँ प्रेशर हाईएस्ट प्रेशर होता है। थोड़ा ये कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसी स्टेग्नेशन प्रेशर की, और फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल प्रेशर है, अगर इसमें हमारे पास एलिवेशन वाले जो हेड्स हैं, एलिवेशन हेड या हमारे पास रो जी एच जिसे हम कहते हैं, जैसे इसमें देखे में रो जी जेड से डिनोट किया हुआ है, इसको हम निगलेक्ट कर दें, क्योंकि एलिवेशन को अगर निगलेक्ट कर दिया जाए तो फिर हमारे पास टर्म बनती है दैट इज कॉल्ड स्टेग्नेशन प्रेशर। तो इसको फिर दोनों को सम करें तो हमारे पास स्टेग्नेशन प्रेशर मिलता है। अगर तीनों को टर्म्स को लेने तो टोटल प्रेशर रहता है, विच इज आल्सो कॉल्ड द बर्नौली इक्वेशन, कंप्लीट बर्नौली इक्वेशन को हम इसको कहते हैं। तो ये सारा आपने स्टडी करना है। ये हमारे पास इसको पी डॉट जो ट्यूब है, जो स्टैटिक ट्यूब है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, ये सारे टॉपिक्स आपने स्टडी करने हैं। इस तरीके से हम स्पीड जो फ्लूइड है उसको हम फाइंड कर सकते हैं पी डॉट ट्यूब की मदद से। ये सारी चीज़ें बता आपने स्टडी करनी है, प्लस इनकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी स्टडी करनी है। सो दैट्स ऑल।